Hello everyone, welcome to my channel Leading Academy. Guys, in the last lecture we have dealt with what is a complaint and how complaint is different from an FIR. Fine. And in today's lecture we're gonna discuss what is an investigation and how investigation is different from an inquiry. Fine. Because these two terminologies, generally people get puzzled with these two terminologies also. Likewise we have seen in the complaint and FIR. Why? Because they think that the inquiry and an investigation are one and the same thing. But ऐसा कुछ भी नहीं है. So I am here to help you out with regard to these two terminologies so that the doubts which might arise in your mind get clear. Fine. So let's get started without wasting the time. Fine. So अब investigation जो होती है, who can do the investigation? Fine. Why investigation is to be done and when investigation is to be done. First question we will see when investigation is to be done. Suppose when a person approaches a police station with regard to a cognizable offense, fine, so that FIR will be lodged thereof against a person. Suppose a person A wants to lodge an FIR against B and accordingly he has approached the police station. पुलिस स्टेशन जब जाता है तो एफआईआर लॉन्च हो जाती है. तो उस सूरत हाल में क्या होगा, जो पुलिस वाले होते हैं दे विल स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन. दिस इज वन वे हाउ इन्वेस्टिगेशन इज टू कम इनटू पिक्चर. फाइन. या मैजिस्ट्रेट जो होता है, मैजिस्ट्रेट पुलिस को ऑर्डर करती है अंडर 156. अगर हम कंप्लेंट करते हैं मैजिस्ट्रेट को, देन इन दैट सिचुएशन police is bound to lodge an FIR and accordingly investigate the matter. Now question arises, is the only police who can investigate the matter or there is anyone else who can also investigate the matter? So definition itself says that all the proceedings under the code of criminal procedure code, which is done either by a police officer or by some other person authorized by a magistrate. Fine. The purpose is to collect the evidences. Fine. This is what definition is all about. Now question arises, who can investigate the matter? Again I am posing a question despite clearing the concept. Fine. Now the police officer is the first person who can investigate the matter, and the second person is who has been empowered, or we can say who has been authorized by a magistrate. That person can also investigate the matter. Now we'll see what is the purpose, or we can say what is the object of investigation. Object of investigation जो होता है that is only to collect the evidences. Suppose अगर कोई cognizable offense हुआ है, then in that situation पुलिस क्या करेगी, उस केस के related cognizable क्या होता है, I have already told you that where a police can arrest you without a warrant, or we can say that it is of serious nature. Fine. So here what police will do, police is here confined only to collect the evidences. जो भी केस के related evidences होते हैं, police will collect those very evidences and accordingly will file a report, police report under 173 class 2 before a magistrate. Now collection of evidence for the prosecution of case. अब जब collection of evidence करने होते हैं पुलिस वालों को during the investigation, now question arises what they can do so that they can collect the evidences. They can arrest a suspect person, arrest भी वो कर सकते हैं, witnesses भी ले सकते हैं who are well acquainted with the factual aspects of the case, or in the certain situations वो search भी कर सकते हैं, seize भी कर सकते हैं, etc. Because there is a full-fledged procedure given to a policeman how they will investigate a matter. So this is the object. Their object is only to collect the evidence. Fine. Now what about the inquiry? Who is authorized to make an inquiry? So the inquiry is done either by a magistrate or by a court. Fine. Here we have seen the investigation is the prerogative of a police official or a person who has been authorized by a magistrate. Fine. But the investigation, now question arises, can investigation be done by a magistrate? No. The answer is no. The investigation cannot be done by a magistrate. Only an inquiry or a trial is to be done by whom? The magistrate or by a court. Now, what is the object of inquiry? We have seen the object of investigation, that it is the collection of evidences. Fine. Now, what is the object of inquiry? What is the purpose? Why inquiry is to be done by a magistrate or by a court? It is
done in order to ascertain the facts, in order to ascertain the truth or the falsity of a case, in order to move further in the case. Fine. यहाँ पे सच क्या होता है, झूठ क्या होता है, वो मैजिस्ट्रेट को देखना पड़ता है. सपोज इफ ही इज हैविंग डाउट विद रिगार्ड टू सर्टेन मैटर्स, देन इन दैट सिचुएशन व्हाट ही कैन डू, ही कैन गेट द मैटर इंक्वायर्ड इनटू. फाइन. सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल. पुलिस वाला है, पुलिस ने क्या करा, ABC के खिलाफ चार्जशीट अंडर 173 क्लास 2 में मैजिस्ट्रेट के पास दे दिया. नाउ उसमें क्या था, उसमें एक लैक्यूना क्या था, पुलिस वालों ने क्या करा है, जो बंदा सी है, ही हैज बीन शोन एज मेजर डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज अ माइनर. अब जब उसको मैजिस्ट्रेट के पास लाया गया तो मैजिस्ट्रेट को वो कह रहे हैं, जय साहब मैं माइनर हूं, मैं नाबालिग हूं, बट आई हैव बीन अरेड बाय पुलिस ऑफिशियल्स एज मेजर इन द चार्जशीट. नाउ what is the remedy available? What magistrate can do here in order to ascertain whether the person C is a minor or major? Simply magistrate inquiry करवा सकता है इस केस में, either by himself or will direct any other person to inquire into the same matter, so that this fact will come into the fore whether the person C is minor or not. Fine. Or we can take some other examples, like we have one section in CRPC 176 which says that inquiry into the cause of death. अगर किसी महिला की, अगर किसी वुमन की डेथ हो गई है, या हम कह सकते हैं किसी की डेथ हो गई है, वुमन की डेथ हो गई विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years, और वी कैन से इफ शी हैज कमिटेड सुसाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years, then the magistrate can get the matter inquired and see how she died. She will see, the magistrate will see the cause of death. उसकी मौत कैसे हो गई है उसके मुतालिक वो इंक्वायरी करवा सकते हैं. फाइन. और वी हैव वन मोर एग्जांपल, वी हैव 202 जिसमें पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यूज होते हैं. उसमें क्या होता है, उसमें भी वो खुद इंक्वायरी कर सकता है या पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने का मौका दे सकता है इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ एम्बिग्यूटी और डाउट. फाइन. सो 202 में भी वो इंक्वायरी खुद भी कर सकते हैं. फाइन. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट in order to ascertain the truth or the falsity. Fine. Once this object is completed, then we have seen who can investigate the matter, who can inquire the matter. We have seen the objects of both inquiry as well as of the investigation. Now we'll see whether the investigation which is done either by a police official or by any other person who has been empowered by the magistrate, whether that proceeding is of judicial nature or that is of non-judicial. So the proceedings which is being done by a police officer or by any other person empowered by the magistrate is purely non-judicial. Fine. But what with regard to the inquiry is, it may be judicial as well as non-judicial. Fine. So ये both हो सकते हैं, judicial भी हो सकती है या non-judicial proceeding भी हो सकती है. Now coming to the another aspect, whether the investigation हम देखेंगे अब स्टेज कौन सा है. इन्वेस्टिगेशन अगर हम जनरली बात करें, जब एफआईआर लॉन्च होती है तो पुलिस स्टार्ट्स इट्स इन्वेस्टिगेशन. सो वी कैन से दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेज. व्हाट विद रिगार्ड टू द इंक्वायरी इज द सेकंड स्टेज. फाइन. सो हमने देखा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या जो है, कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, कौन कर सकता है, कब कर सकता है, इंक्वायरी कौन कर सकता है, कब कर सकता है, किन सूरत हाल में कर सकता है. वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स into this lecture. There is one more concept, but that has nowhere being defined. That is trial. अब ट्रायल को जो है, ट्रायल और इंक्वायरी में क्या फर्क है? These two concepts are there. Though these two concepts, investigation and inquiry, has been defined by the court, but जो ट्रायल है इसको कहीं पे भी डिफाइन नहीं करा गया है. So how we will come across that the inquiry and the trial, इनमें क्या फर्क है वो हम कैसे देखेंगे? So I may tell you one thing, there is a slight difference. जो ट्रायल होती है ये it starts when charge is framed. जब चार्ज फ्रेम होता है उसके बाद जो होती है ट्रायल स्टार्ट होती है. और we can say this is the third stage. It follows after inquiry. When inquiry is done, then trial starts. और इंक्वायरी और इसमें क्या फर्क है? इंक्वायरी में क्या हो जाता है, वी कैन से बिफोर द चार्ज
before charge is framed, all the proceedings which are done by a magistrate or by a court, they will come within the ambit of inquiry. And afterwards, when charge is framed, then a full-fledged procedure is to be followed. That is called a trial. In this trial, क्या हो जाता है? दोनों पक्ष आ जाते हैं, प्रोसिक्यूशन आ जाता है, एक्यूज्ड साइड से अगर उसने एक्यूज्ड को बुलाया जाता है, उसका वकील आ जाता है, जब वो अपना वकील करता है, तो उस सूरत हाल में क्या हो जाता है? फुल फ्लेजेड प्रोसीजर फॉलो हो जाता है. उसमें क्या होता है? ये भी अपने एविडेंसेस लाता है, वो भी अपने एविडेंसेस लाता है. अकॉर्डिंगली एट द एंड दिस ट्रायल एंड्स विद ईदर कन्विक्शन और एक्विटल. इसमें दो ही चीजें हो सकती है. इट विल रिजल्ट ईदर इन कन्विक्शन, या तो वो कन्विक्ट होगा या तो वह एक्विट हो जाएगा. दीज आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज. बट विद रिगार्ड टू द इंक्वायरी, यहाँ पे या तो वो डिस्चार्ज होगा, या अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है दैट द मैटर विच इज बिफोर हिम इज नॉट ट्राइबल बाय हिम, दिस इज होली एंड सोली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, देन इन दैट सिचुएशन in inquiry proceedings that case will be committed to the concerned firm. Fine. And with regard to the discharge हो सकता है यहाँ इंक्वायरी में. अब डिस्चार्ज होता क्या है? If the magistrate is of the opinion that there is no ground made out against the accused person, then the magistrate concerned will discharge the person concerned, the person accused hereof. So I hope that the investigation, inquiry, and the difference between these two terminologies are now clear. And with regard to the inquiry and the trial, I hope that everything is clear, and I hope also that this video is definitely informative for you. Thank you so much.